Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Transferable Skills Development, MGT 495, and today is lecture number 3, and I'm your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. Today we are going to talk about conflict management in organizations, part 2. Now, in our previous lecture, we have talked about conflict, what it is, what feelings do you have when you are in conflict situation, your history with conflict, and why you are involved in conflict situation, and what is the relationship of conflict management and skill development. Okay, let's have a brief reflection of previous lecture. In our previous lecture, we have talked about conflict, that why we are involved in conflict. Now, when you have a difference in your ideas and views with any other person, you are in conflict situation. Now, talking about conflict, in our previous lecture, we have talked about conflict is of two types, positive and negative. Now, positive conflict means that you are giving importance to other person's ideas and views. And negative conflict means that you are not giving importance to other person's ideas and views, and you are trying to impose your own ideas and views on others without respecting others' ideas or views, or without giving importance to others' ideas and views. So people have differences in values. Like for example, some people, they are more quality conscious, and some people, they are more quantity conscious. So when these two different type of people, when they are working together in an organization, they are in conflict situation, because one is saying hurry up, and the other is saying no, we need not to compromise on quality. So कुछ लोग क्वांटिटी की ज़्यादा बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, but there are some people who do not want to compromise on quality. So naturally फिर क्या होगा कि दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. People have different expectations. Like for example, हमने previous lecture में बात की थी कि employees and employer, they have different situations. Like for example, employers, they have high expectations from their employees. On the other side, employees think that those expectations from the employer are unrealistic. So employers, they emphasize more on कि जी जो उनकी expectations हैं वो meet की जाएं, और employees जब उन expectations पे अगर पूरा नहीं उतरता, they are in conflict situation. People have different needs, people have different attitudes and behaviors, so they have conflict. In our previous lecture, we have talked about different feelings that are associated with conflict. Like for example, some people, they get angry when they are in conflict situation. Some people, they get frustrated. Some people, they get excited. And some people, they go into fear. So these are the common feelings associated with conflict situation. Now, it is highly recommended that when you are in conflict situation, take conflict as an opportunity. Do not take it as a threat. Do not take it as negative. Take it as an opportunity. So you have the opportunity to solve a problem. You have the opportunity to give your point of view.
So instead of doing that blame game, like everybody puts the responsibility on someone else's shoulder. So instead of doing this thing, what you need to do is you need to move towards solving problems. So solving problem is more important than proving who is right or wrong. So it should not be like this कि लोग एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर दें. So instead of attacking on each other, instead of making those blames on each other, what we need to do is we need to accept our responsibility and we need to give our input and we need to respect others' point of views as well. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये तमाम हमने डिस्कस किया था. आज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट 2 की हम बात करने जा रहे हैं. नाउ व्हाट वी नो अबाउट कॉन्फ्लिक्ट. Conflict is a naturally occurring phenomena for human beings. Now, it is not something which is abnormal or which is like not natural. It is a natural phenomena that people have conflicts with each other. There is no working place. There is no way to work with people on conflict-free basis. So, जैसे हम कहते हैं कि कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई दो दिमाग एक जैसे नहीं होते, कोई दो परसेप्शंस या थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, तो इसीलिए conflicts are a natural phenomena. People think differently, people behave differently, people have different attitudes. So since humans have different attitudes and behaviors, so they have conflicts. So it is a natural phenomena. So we need to accept this phenomena like this. बजाय ये कि conflict को आप abnormal activity समझें. It is something which is normal and which is natural. People do not get involved in conflict situation unless they have some stake involved in the relationship or outcome or both. Now, conflict में लोग तब involve होते हैं when they have some stake involved in the relationship or outcome or both. कि जब तक लोगों का उस सिचुएशन के साथ या किसी पर्सन के साथ या आउटकम के साथ अगर कोई रिलेशनशिप जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक वो उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते. इट मीन्स दैट कि आपका कोई ना कोई स्टेक इन्वॉल्व होना ज़रूरी है आपका उस कॉन्फ्लिक्ट में आने के लिए. Now, one can never truly resolve conflict, one can only manage conflict. The cost of unmanaged conflict can be high, but the gains from using differences creatively can also be great. So this is really very important that कि conflicts में जो differences हैं, अगर वहाँ पे उसको creatively use किया जाए, तो जो उसके results हैं that are great. तो बजाय ये कि कॉन्फ्लिक्ट में आपके हम एक दूसरे की एनर्जीज एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जीज यूज करें और उसको हम वेस्ट करें. सो व्हाई नॉट वी प्रमोट पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट और उसको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएं. तो जो हम एक दूसरे के साथ जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, हमारे जो हम आर्गुमेंट्स करते हैं फॉर अगेंस्ट और व्हाटएवर, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्रिएटिविटी की तरफ हो, इंप्रूवमेंट की तरफ हो, ताकि जो रिजल्ट है वो एक वंडरफुल रिजल्ट हो सकता है. बजाय ये कि एक दूसरे को राइट रॉन्ग साबित करने के, व्हाई नॉट हम इंप्रूवमेंट की तरफ बात करें. कॉन्फ्लिक्ट कैन ईदर बी प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. नाउ here we are talking about positive conflicts and negative conflicts.
conflicts are productive when they are positive and conflicts are destructive when they are negative. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफिस मीटिंग्स में देखा होगा कि कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं. नाउ कुछ लोग पहले से अपना माइंड सेट करके आते हैं कि मैंने दूसरे की बात नहीं माननी. तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट. और पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि यू गिव योर सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट. तो बजाय ये कि एक दूसरे से आप रिवेंज लेने के लिए मीटिंग में बैठे हुए हैं, बजाय ये कि आप ब्लेम गेम का एक हिस्सा बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट. सो डिस्ट्रक्शन की बजाय आप प्रोडक्टिव तरीके इख्तियार करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे को वैल्यू दें, एक दूसरे को आप केयर करें एक दूसरे की. सो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करें. But of course, we have sometime one situation or sometime we have the other situation. Now, why and how do we get in conflict situations? So let us discuss it. कि why conflict arise? People differ so they see things differently. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज को लोग डिफरेंटली देख रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, तो कुछ लोग हैं वो क्लासरूम के अंदर यही देखते रहते हैं कि यहाँ चेयर्स किस किस्म की हैं, यहाँ टेबल किस किस्म का है, यहाँ पे फर्नीचर किस किस्म का है. और कुछ लोग हैं दे फोकस मोर ऑन द लेक्चर, कि जो लेक्चर है, जो प्रेजेंटेशन है, जो कंटेंट है, वो उस पर फोकस करते हैं. तो एक ही क्लासरूम को देखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है. सो व्हेन पीपल सी द सेम ऑब्जेक्ट, सेम थिंग्स डिफरेंटली, कॉन्फ्लिक्ट अराइज. अगर कोई पर्सन यही बात करता रहता है कि क्लासरूम के अंदर क्या था, कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई थी, और वो like for example, what I'm not saying that these things are not important, what I'm saying is that आपका ज़्यादा फोकस जो है वो कोर्स कंटेंट के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए उसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी रखें और बाकी चीज़ों को नंबर 2 पे आप रखें. लेकिन इन सम केसेस सम पीपल व्हाट दे डू इज दे डू ऑपोजिट. लाइक जो चीज़ पहले पे होनी चाहिए उसको नंबर 2 पे कर देते हैं, और जो नंबर 2 पे होनी चाहिए उसको नंबर 1 पे कर देते हैं. सो देन दे आर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स. नाउ पीपल वांट्स आर डिफरेंट. सो पीपल since they have different wants, some people they want more money. Some people they want more authority. So when there is a difference of wants, conflict arise. People have different thinking styles which prompts them to disagree. Now it depends on your perception. एक ही चीज को, एक ही सिचुएशन को एक डिफरेंट परसेप्शन से भी देखा जा सकता है और एक बिल्कुल एक इंटायरली ऑपोजिट परसेप्शन से भी देखा जा सकता है. तो कुछ लोग जब किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसी कोई भी इशू है, कोई भी चैलेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, सिंपल एग्जांपल, कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है उसमें 50% वाटर है, तो कुछ लोग कहेंगे ये आधा भरा हुआ है, कुछ कहेंगे आधा खाली है. So that shows their thinking style. Some people they are optimistic, some people they are pessimistic. जो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो कहते हैं कि आधा भरा हुआ है, जो पैसिमिस्टिक हैं वो कहते हैं आधा खाली है. Both are correct. Both are correct, but
it shows their thinking style. Some are optimistic and some are pessimistic. So the conflict arises. People are predisposed to disagree. Now, some people, they already set their mind. Before attending any meeting or before any discussion or before making any decision, they already set their mind कि मैंने ये करना है. अब दूसरा पर्सन, नेक्स्ट पर्सन कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी प्रूव कर ले, आपने पहले से माइंडसेट बनाया हुआ है कि जी मैंने एग्री करना है या मैंने डिसएग्री करना है. तो जब आप अपना ऑलरेडी माइंडसेट बना के मीटिंग में आए हैं, तो दैट creates negative conflict. People have different personalities. Some people, they are extrovert, some people are introvert. कुछ लोगों को बहुत बात करने का शौक होता है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं, और कुछ लोग they are good listeners. So they have different personalities. Some people, they influence others easily through their good presentation skills, through their good leadership skills. On the other side, some people, they are very simple and they don't have that skill to influence others. So due to differences in personalities, people move towards conflict. People have different status, like designations, low level, middle level management. You're part of top level management. You belong to a high income level group. You belong to a low income level group or middle income level group. So people have different status. So due to different status in their society, in their office, different social classes, conflict arise. People have different goals. Some people, they have different goals, some people, they have some other goal. So people have different goals to achieve, and when they sit together and when they discuss, so conflict arise. And finally, people are influenced by fear, force, fairness, or funds. Again, responses are different when you are facing the same fear, force, fairness, or funds. So responses are different because, so due to difference of your response, conflict arise. Now, let us talk about certain issues. Let us talk about the facts. Present situation, problems. Now, these are the issues. Now, due to the present situation or problems, conflict arise. Goals, how things ought to be, the future conditions sought. Now people have different goals कि चीज़ों को कैसे होना चाहिए और फ्यूचर में कैसे चीज़ों को होना चाहिए, प्रेजेंट में चीज़ों को कैसे होना चाहिए. So people have different goals. Methods, the best, the easiest, the quickest, the most ethical. This third point is really very important. In order to complete any job, in order to complete any task, what happens that some people, they prefer to choose the best method to do any job. Some people, they prefer to choose the easiest method to do the same job. Some people, they prefer to use the quickest method to do the job. And some people, they want to use the most ethical method to do the same job. So when you look at this again, the methods, bullet, what comes in your mind? आप अपने बारे में सोचें कि आप इसमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे. Best, easiest, quickest, or most ethical. So of course, employees, they use different methods, and when they use different methods, they have a conflict. Because some people say, no compromise, we should only use the best method. Other person may say that why not we use the easiest method. Third one says that why not we use the quickest method to complete this job. And some people, they are of the view that why not we use the most ethical method.
Values, the beliefs about priorities that should be observed in choosing goals and methods. Now people have different set of priorities. Now how do we set priorities? Now that depends on कि किस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं. Now people who are more money conscious, वो उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी में रखेंगे जहाँ पे ज़्यादा उनको मनी मेकिंग हो रही है. Some people, they are more quality conscious. They never compromise on quality, whether they are making good money or not. And finally, the history. What has gone on before? We are continuously learning from our past experiences. So, your history with conflict. कि पहले क्या हुआ, आपने क्या किया, उसका रिजल्ट्स क्या थे. So those, that history may differ from person to person. तो person to person जब history change होती है तो definitely responses change होते हैं, क्योंकि same situation में you have a different experience, in other situation you have a different experience. So people have different experiences in the same situation. तो जिसका good experience होता है वो कहता है why not we do the same thing, and some people they have bad experiences of the same situation, so they have opposite point of view. Now talking about the popular theories of conflict, we have two theories. One is called the traditional theory, the other one is called the modern theory. Now first let us talk about the traditional theory. Conflicts are caused by troublemakers. Now this is one situation that some people they say that कि जो भी conflicts हैं वो caused by troublemakers हैं, कि जो लोग conflicts का बाइस बनते हैं organizations में, they are called the troublemakers. Conflicts are bad. Conflicts should be avoided. Now when you look at traditional theory, now let us look at the modern theory. और मुझे बताइएगा कि in present situation in Pakistan कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आती है. Modern theory says that conflicts are expected between human beings. Conflicts are often beneficial. Conflicts are the natural result of change. And conflicts can and should be managed. Now, before discussing these two theories, briefly मुझे आप ये सोचें कि in most of the public sector of Pakistan आपको कौन सी theory नज़र आती है जो इस वक्त apply की जा रही है यहाँ पे. In most cases in the public sector of Pakistan, we see the usage of traditional theory. अक्सर ऑफिस मीटिंग्स में देखा गया कि जो लोग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनको ट्रबल मेकर्स कहा जाता है, उनको समटाइम एबनॉर्मल कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि दे आर द रूट कॉज, कि इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो यूनिटी को खतरा है. और ये सोचा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हर सूरत में अवॉइड किया जाए. तो ट्रेडिशनल थ्योरी की एप्लीकेशन हम ज़्यादा देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. वेराज अगर हम एडवांस कंट्रीज को देखें तो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट किया जाता है. सो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट यू मूव टूवर्ड्स promoting positive conflict, because having conflict is a natural phenomena. There is no way to work with people without conflict. So because conflicts are beneficial, they are the natural result of change, and conflicts can and should be managed. So we need to move towards using
the modern theory of conflict. Now let us talk about the different types of conflict, and the first one is called differences in style. People's style for completing a job can differ. For example, one person may just want to get the work done quickly, task oriented, while another is more concerned about having it done a particular way, for example, artistic. Now, when these two type of people are working in the same department in an organization, what happens? Due to differences in their style, conflict arises, because one person is task oriented and the other person is quality conscious and more artistic. Differences in background, gender. Conflicts can arise between people because of differences in educational backgrounds, personal experiences, gender, and political preferences. Now, when people have different educational backgrounds, they develop their own point of view. So people having degrees in business administration, people having degrees in some, like for example, English literature or Urdu or some Iqbaliyat or some history or some other discipline. So due to differences in educational backgrounds, people have their own point of view. Due to differences in personal experiences. Now, one person may have a different experience in one situation and the other person may have another experience in the same situation. So one may have a positive experience of the same situation, the other person may have a negative experience of the same situation. So when those two people sit together, one says that this is really very bad, the other says no, this is wonderful. So they are in conflict situation. Due to gender, male, female, who is more intelligent, who is more dominant, who is more responsible. So discussions like that. And political preferences. Now, due to differences in political preferences, some people they say that, for example, one party is better than others, the other says that no, this next party is better, the third says that no, we have another party that is much better. So people have different political preferences. So due to differences in background, gender, due to differences in educational backgrounds, due to differences in personal experiences, due to differences in gender and political preferences, conflicts arise. Differences in personality. This type of conflict is often fueled by emotion and perceptions about somebody else's motives and character. Now, for example, a team leader jumps on someone for being late because he perceives the team member as being lazy. On the other side, the team member sees the team leader as being irrational. Now you say that same situation due to differences in personality, team leader and that team member, they have a total different point of view in the same situation.
interdependence conflicts. A person's job depends on someone else's cooperation, output, or input. For example, a salesperson is constantly late inputting the monthly sales figures, which causes the accountant to be late with his or her reports. Now, interdependence. आपका काम किसी के ऊपर और के ऊपर डिपेंड करता है. Like for example, we have certain channels कि फाइल जो है वो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को आएगी, डिपार्टमेंट बी से सी को जाएगी, सी से डी को जाएगी और डी से वो अप्रूवल के लिए जाएगी टॉप मैनेजमेंट को. नाउ अगर डिपार्टमेंट ए जो है फाइल को लेट करता है तो डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर. तो अगर लेट एक डिपार्टमेंट करेगा तो वो जाहिर बात है कि दूसरा भी उसके ऊपर लेट हो जाएगा, तीसरा भी लेट हो जाएगा, चौथा डिपार्टमेंट भी उसको रिस्पॉन्ड करने में लेट होगा. तो वो इंटरडिपेंडेंस की वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. और अक्सर देखा गया इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के कॉपरेशन, आउटपुट और इनपुट के बहुत इश्यूज हैं कि ड्यू टू फॉर एग्जाम्पल लैग पुलिंग, अगर लैक ऑफ कॉपरेशन है तो व्हाट हैपन्स दैट कि अननेसेसरी डिलेज आते हैं. somebody asked me a question in a seminar that what is the difference between public sector and private sector of Pakistan in 2 words. I said response time. Now, I strongly believe that this is the difference between public sector and private sector of Pakistan. The response time is very quick in private sector of Pakistan, but in case of public sector of Pakistan, the response time is, it takes a longer time to respond. Now, this is really very important that we need to take certain steps in order to improve the cooperation, output or input. And then differences in leadership. Leaders have different styles. Employees who change from one supervisor to another can become confused. For example, one leader may be more open and delegates responsibility, while another may be more directive. For an employee, it becomes a conflict situation. Now you see the differences between the leaders. One leader is more, open and more flexible and delegates responsibility, while another may be more directive. So one is more authoritative, the other is believes on empowering his or her followers or subordinates. So when a same employee, once he is working under the supervision of a flexible boss, and after some time the same employee works under the supervision of a authoritative boss, the employee gets confused. Now, ये जो हमने different types देखी हैं अभी तक, तो now you see that these are the, due to different types of conflict, these are the major reasons of conflicts. Now, another very important question we need to address now is how to resolve conflicts. अभी तक हमने देखा कि what is conflict, how it arises, different types of conflicts. Now, how to resolve these conflicts. For example, in your office, in your home, in your social circle, in your business, so wherever you have any conflict. Now this is the set pattern.
This is a systematic way to resolve conflicts. Step number 1 is set the scene. Understand the situation rationally. आप सिचुएशन को रैशनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. Now this is really very important that you should not get emotional. सबसे पहले this is really very important that you should understand the situation rationally कि हुआ क्या है. ग्राउंड रियलिटी को आप देखेंगे. Step number 2 is gather information. Understand each other's needs and concerns. Very important. आपने एक दूसरे की नीड्स और कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन 2 कंट्रीज हैं, तो जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उनकी एक उन पार्टीज जो डिफरेंट पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 पार्टीज हैं तो उन दोनों पार्टीज की जो नीड्स और कंसर्न्स हैं उसको अंडरस्टैंड करके उसको आपने राइट डाउन करना है. स्टेप नंबर 3 इज एग्री टू अ प्रॉब्लम. डिफाइन अ म्यूचुअल प्रॉब्लम. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द म्यूचुअल प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम. दोनों पार्टीज का आपस में म्यूचुअल प्रॉब्लम क्या है उसको आपने उस पे उन दोनों पार्टीज के साथ डिस्कस करके आपने उनको एक कॉमन प्रॉब्लम, म्यूचुअल प्रॉब्लम की तरफ लेके आना है, उनको एग्री करना है वहां पे. स्टेप नंबर 4 इज ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस. Think of all the possible solutions. Now, thinking of all the possible solution is only possible if you allow brainstorming. If you do not use your authoritative technique, this is only possible if you allow people to give their point of view without any influence. So you do the brainstorming and you explore all the possible solutions and alternatives of the conflict you are facing. And finally, step number 5 is negotiate a solution. Come to solution that is agreed by both the groups. Now this is really very important that कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको एक निगोशिएट करें कि आप वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो हैं, जो दोनों पार्टीज हैं, उन दोनों को वो एक्सेप्टेबल हो. Now another question arises here that if the situation remains a conflict, ये जो 5 steps आपने किए, step set the scene, gather information, agree to a problem, brainstorm possible solutions, negotiate a solution. आपने 5 steps apply कर दिए, but even then the situation remains a conflict. Then what one should do? Then consider seeking a third party to mediate. आप mediator लेके आएंगे. Now mediator is a person who acts as a bridge between those parties who are in conflict situation. तो मीडिएटर क्या करेगा कि उन दोनों पार्टीज के दरमियान एज ए ब्रिज काम करेगा और दोनों को एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी को जाके बताएगा और दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पहली को जाके बताएगा. सो ही और शी इज एक्टिंग लाइक ए ब्रिज. ओके, बट व्हाट हैपन्स इफ द mediator also fails? So finally, we move on towards arbitrator. Now, arbitrator is a person or organization which has the decision-making authority, final authority. आपने step 1 to 5 आपने apply किए.
कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ, आप मीडिएटर लेके आए, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ. नाउ यू नीड टू मूव टूवर्ड्स हैविंग द this decision of arbitrator. Now arbitrator has the authority, has the power to make the final decision. So this is the way you resolve conflicts. There are more techniques, like for example, how to resolve conflicts. Recognize conflict is a process to be managed, not avoided or eliminated. Now, कॉन्फ्लिक्ट को आपने अवॉइड नहीं करना, आपने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसको आपने मैनेज करना है. कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, नॉट अ बैटल टू बी वन. कॉन्फ्लिक्ट को एक आप उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, ना कि आप उसको एक ऐसी बैटल समझ लें जिसको आपने हर सूरत में विन करना है. अब नाउ सिचुएशन क्या होती है कि इन मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दैट के लोग प्रॉब्लम से हटकर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को राइट और रॉन्ग साबित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड. सो बजाय ये कि मैं ये समझूं कि माई सक्सेस इज योर फेलियर और योर सक्सेस इज माई फेलियर, हमें इस चीज से बाहर निकलना. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मूव टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ प्रूविंग ईच अदर राइट और रॉन्ग. Stay focused on the problem or issue to be solved. और अपनी तमाम एनर्जीज और अपना जो फोकस है उसको प्रॉब्लम और इशू टू बी सॉल्व के ऊपर रखें, बजाय ये कि आप पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दें. तो जब आप पर्सनल अटैक्स करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को आप नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं. एंड रिजल्ट इज ऑफ कोर्स, जब आप नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि वो मजीद नेगेटिव होगा. तो प्रॉब्लम को फोकस करें, इशू को फोकस करें, बजाय ये कि आप पर्सन को फोकस करें. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, यू कैन आस्क द अदर पार्टी that okay fine, what you want, what you suggest, okay what is your point of view here, what are the alternatives, what are the solutions available, how to overcome this problem. So instead of asking close-ended questions where you are giving only few options and you tell the other party that you have to select any one of these options, never do that. Because if you ask close-ended questions, there is a negative impact on the other party. So try to get the ground reality, try to find out the real feedback, and that is only possible if you ask open-ended questions. And you must be an active listener. एक फिलोसफर ने कहा कि इस दुनिया की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं if we become good listener. So people who are active listeners, they are better decision makers than those people who are poor listeners. और लिसनिंग के बारे में ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि काश मैं उसकी बात को पहले समझ जाता, काश मैं उसकी बात को पहले गौर कर लेता, काश मैं उसकी बात को गौर से सुन लेता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता. तो हम अपनी जिंदगी में ये काश काश वाला वर्ड है, इसको हम कम कर सकते हैं, और वो तभी मुमकिन है
जब हम एक्टिव लिसनर हों। तो बजाय ये कि आप जल्दी में दूसरे की बात को आप सुने ही ना, उसको इग्नोर कर दें और अपनी बात आप करते रहें, तो बेहतर डिसीजन नहीं हो सकते। सो यू नीड टू डू द एक्टिव लिसनिंग, और जो लोग एक्टिव लिसनिंग करके बात करते हैं, दे आर मोर वाइज एंड बेटर डिसीजन मेकर्स। कीप इमोशंस इन कंट्रोल, very important. If you do not keep your emotions in control, you are in big trouble. So you need to be rational as well as emotional. You need to have an alignment. I'm not saying that you should not be emotional. What I'm saying is you need to have an alignment between your emotions and your logics. So control your emotions. Do not lose your temper. Do not become aggressive, because that will multiply the problem if you lose your temper. Because once you lose your emotions, once you lose your temper, you are unable to focus on the problem, you are unable to focus on the conflict, and you know, lose your focus and you start talking about other irrelevant things, and that multiplies the problem, that multiplies the conflict. Separate people from the problem. A very important point. Do not mix people with the problem. So if you do that personal attacks, you are just multiplying the negative conflicts. So you need to separate the problem from the people, and then focus on interests, not positions. And finally, use ground rules. Now let us talk about different styles of conflict, and you see that we have a graph here. On y-axis we have the relationships, on the x-axis we have the goals. We have 5 conflict styles here according to philosophers and researchers all over the world. Now let us see that what are these different 5 conflict styles, and we will discuss these styles one by one. And the style number 1 is called turtle. Now according to research, now these are those type of people who withdraw easily. Like for example, these are the type of people who are called turtle, and what they do is they avoid conflict at all costs. So these type of people, they avoid conflict, and whenever they are in conflicted situation, they fly from there. They just avoid conflict, and they do not want to face any conflict, and they avoid it at all costs. किसी भी कीमत पे वो conflict को face ही नहीं करना चाहते. Whatever the results are, they just avoid conflict. Give up their personal goals and relationships. Now वो अपने personal goals और relationships को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, और उनके नज़दीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें और उसको फेस ना करें, क्योंकि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को फेस करेंगे तो वो पर्सनल गोल्स और रिलेशनशिप्स की बात करेंगे. सो इवन वो अपने पर्सनल गोल्स रिलेशनशिप्स को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड or ignore conflict. These turtle type of people, they believe it is hopeless to try to resolve conflict. ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि there is no hope to try to resolve conflict. They feel helpless, मायूस हो जाते हैं बहुत जल्दी. Easier to withdraw than face conflict. और ये वो लोग हैं जो बहुत इस चीज़ को ईजी समझते हैं कि विड्रॉ किया जाए बजाय ये कि कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया जाए. सो टर्टल टाइप ऑफ पीपल,
they believe on withdrawing, they avoid conflict, they ignore conflict, they do not want to face conflict, और वो withdraw करने को preference देते हैं as compared to facing conflict. And the second style is called shark. Now shark means forcing. Now these type of people, they try to overpower opponents by forcing them to accept their solutions. ये वो लोग हैं जो दूसरों पे अपने डिसीजंस मुसल्लत कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं, not concerned with needs of others. They are careless people. They are not concerned कि what happens with others. They are selfish, and they focus on their own needs and wants, and they do not think about others' needs or wants. अपने फायदे की बात को हमेशा फोकस करते हैं और दूसरे का चाहे जितना भी नुकसान हो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरा जो है उसका जितना भी नुकसान हो तो मैं क्या करूं. Do not care about how others perceive them. Shark type of people, they don't care about others. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इनको अच्छा समझें, बुरा समझें. They don't care. They believe in winning and losing. ये वो लोग हैं जो विनिंग और लूजिंग पे बिलीव करते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आर या पार, कि मैंने हर सूरत में विन करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. विनिंग गिव्स देम ए सेंस ऑफ प्राइड. जब ये जीत जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक जैसे एक मगरूर टाइप एक उनकी एक होती है जो एक नज़र आ रही होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज. दे ट्राई टू विन बाय अटैकिंग एंड थ्रेटनिंग अदर्स. और ये विन करने के लिए दूसरों के ऊपर अटैक करना, दूसरों को धमकी देना, थ्रेट करना, उससे भी बाज नहीं आते. सो ओवरऑल जब आप देखते हैं कि दीज शार्क टाइप ऑफ पीपल, दे हैव नो concern with others' needs and wants. They are extremely selfish, and they believe in winning and losing, and they are trying everything, whether legal, illegal, ethical, unethical. They do each and everything to win. And the third conflict style is called teddy bear. Now, teddy bear type of people, for these type of people, relationships most important, goals of little importance. Now, here we are talking about the organizational goals. Teddy bear type लोग जो हैं ये अपने like for example अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल सर्कल को, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नाउ जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सो व्हाट हैपन्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रिश्तेदारों के लिए नहीं हैं. इट मीन्स के इन ऑर्डर टू मेक देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स हैप्पी, they even violate rules and regulations. ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी नुकसान हो, लेकिन इनके दोस्तों का, इनकी फैमिली का फायदा होना चाहिए. They want to be accepted and liked by other people. ये वो लोग होते हैं जो हर दिल अजीज होते हैं. अक्सर अपने ऑफिसेज में लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं टेडी बियर जो हर एक को हाँ करते हैं. ये वो लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. इट मीन्स दैट कि इवन आई कैन वायलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो बिकॉज इनके पास कोई भी पर्सन काम लेके आता है
तो वो उसको यस कर देते हैं। और यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं कहता चलूँ कि जो लोग हर पर्सन को हर काम में हाँ करते हैं वो सबसे बड़े मुनाफिक होते हैं। तो they believe conflict should be avoided in favor of harmony। और ये हार्मनी क्रिएट करने के लिए ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा ही ना जाए, इससे रिलेशनशिप डैमेज होते हैं। fearful that conflict will hurt someone। वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आने से जो है वो किसी न किसी को तकलीफ होगी। तो चाहे पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई किसी चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट होगा तो समवन विल गेट हर्ट। तो इससे बजाय ये है कि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा ही ना जाए। तो ओवरऑल अगर हम टेडी बियर टाइप ऑफ पीपल को देखते हैं तो इनके नज़दीक रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपस के, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो बहुत कम इंपॉर्टेंट हैं। Okay, number 4 conflict style is called Fox. Now, Fox, compromising. These type of people, they are moderately concerned with relationships and goals. मतलब ये moderate होते हैं goals और relationships के साथ। They are willing to sacrifice part of their goals and relationships in order to find agreement for the common good. Now, common good के लिए ये अपने relationships और goals को भी sacrifice करने के लिए तैयार होते हैं। It means that they can compromise in different situations. And next, number 5 style, conflict style is called owl. Now, owl collaborating. These type of people, they value goals and relationships. So now you see that alignment, goals and relationships. So individual goals and professional goals and relationships. So they have an alignment. They view conflicts as problems to be solved. So जैसे हमने पहले बात की कि the real meaning of problem is an opportunity. So all type of people, they view conflict as problems to be solved. They take problem as an opportunity. See conflicts as improving relationships by reducing tension. So another important thing is they want to reduce tension. They want to reduce stress. They do wonderful stress management. And how they do it? By resolving conflicts. So once you resolve conflicts, that reduces tension and that improves performance. Seek solutions that satisfy both parties. This is really very important, that they move towards mutual agreements. So instead of imposing their own decisions, they try to find a mutual agreement that satisfy all parties which are in conflict situation. And these all type of people are not satisfied until solution is found and tension is reduced. So until they find a mutual solution of the problem, they are not satisfied until the solution is found and tension is reduced. So the question here is, out of these 5 styles we have discussed so far, which style is the best?
Okay, the best style is called OWL, because these are the type of people who give importance to organizational goals and relationships, and they create a balance, and they focus more on solving problems, and they focus more on having a mutual agreement, a mutual solution that satisfy all those parties who are in conflict situation. Now we need to decide on a SMART agreement, and SMART stands for specific, mutually acceptable, appropriate, realistic, and time bound. In any business situation, solving the problem is the goal, not winning. Now this is really very important, and this is the most important message of today's discussion on conflict management in organizations, that in any situation, solving the problem is the goal, not winning. So if you think that okay, your success is my failure, or if I think that my success is your failure, we're not focusing on problem solution, we are focusing on winning or losing. So instead you focus more on winning and losing, we need to focus only on problem solution. And once we solve the problem appropriately, that is the best thing we need in our organizations to be more successful. And these are the peaceful conflict resolution: respect each other, express your true feelings, share your thoughts, open your mind to different points of view, listen carefully to all ideas, understand the reason behind the problem, think about different solutions, imagine a creative solution, offer some reasonable compromises, and finally negotiate fair agreements. Thank you very much all of you. I hope that with the help of today's lecture आपने बहुत लर्न किया होगा अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस. आज हमने इसको कंक्लूड किया है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलपमेंट. इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. खुदा हाफिज़.